Hi friends, am I audible? Can you hear me? Just tell me whether I'm audible. Okay, so just tell me whether you can hear me, friends. I'm audible to you. So, I think it was your exam of, and it went well. Let me start here. Okay, so let's start it, friends. Our session, and this session is post Bharat Electronics Limited एग्जाम सेशन और सीबीटी का डिटेल एनालिसिस आज रात तक पीडीएफ के फॉर्म में आपके पास आ जाएगा. ये पहला ड्राफ्ट है. सो सम 70 क्वेश्चंस आर देयर ऑलरेडी. राजीव सर के पास हैं 70 क्वेश्चंस का, उन्होंने सोल्यूशन बना दिया है और बाकी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं अभी. एक जो फीडबैक आया है स्टूडेंट से वो ये था कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जिसके 2 लेक्चर्स हमने भी कवर किए थे, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से बहुत से क्वेश्चन आए हैं. आई ओनली होप कि आप लोगों ने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को छोड़ा ना हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आप करके गए हो, क्योंकि एग्जाम्स में अगर आप देखोगे पिछला बीईएल का पेपर तो उसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पूछा गया था काफी, और 6-7 क्वेश्चंस उसमें भी थे. इस बार मेरे को लगता है कि उससे ज्यादा ही क्वेश्चंस आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से आए थे, and you could have done very good in industrial engineering, but it looks like very less students have done properly industrial engineering, and those who have done industrial engineering good, they are getting an edge actually. So difficulty level of electronics also was easy, and I think mechanical it was mechanical it was moderate, जो मेरे को लग रहा है, जो आपके क्वेश्चन से मेरे को लग रहा है. तो फ्रेंड्स दिस हाँ 15 to 20 क्वेश्चन आप देखो काफी सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस होता है, एंड आई होप कि आपने उसको अच्छे तरीके से किया हो. एंड दिस PDF of YourPedia has prepared this particular PDF for you, and by the night entire paper और उसका PDF आपके साथ शेयर हो जाएगा. So next 1 hour or 2 hours में entire PDF of mechanical engineering will be shared with you along with the detailed solution, only if you people keep on sharing the questions. So this PDF is nothing but this is the questions which you people are providing, and the let me tell you how you have to see it, how YourPedia is providing you this PDF on the basis of the question जो आप लोगों ने याद किए हैं, उसके बेस पे क्वेश्चन रहेगा और उस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल इजी था, मॉडरेट था, कैसा था, and then question will be shared with you. So first draft of PDF will be shared with you by half an hour, within half an hour. First draft will be shared with you, and then second draft will be the final draft, जो मेरे को लगता है आज रात को 9:30-10 बजे तक हम बना देंगे. तो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरा सॉल्यूशन, पूरा पेपर, एंटायर पेपर विद सॉल्यूशन PDF will be shared with you by 9:30 in the night. So friends, let me also conceptual question from so as Varun is saying, conceptual questions were there from fluid mechanics. That is true. In EC, some questions are like both options are correct. So Padma, looks like you need to see. I mean, you need to provide the question in which you are thinking that way, because the mentors have provided you the solution. अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन लगता है तो उसको शेयर करना. हाँ, कट ऑफ कितना जाएगा छोटू, दैट वी आर गोइंग टू एनालाइज सून, और आज जैसे सारे के सारा PDF आ जाएगा तो उसके बाद हम उसका कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे, बिकॉज पिछली बार कितना कट ऑफ गया था और इस बार कितना कट ऑफ जाएगा उसका एनालिसिस हम लोग करेंगे. सो वी आर गोइंग टू डू दैट एनालिसिस. यस, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल मैंने आपको बताया था आएगा उसमें से, इसीलिए तो व्हाई यू थिंक YourPedia कवर्ड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. आप देख लो, उठा के देखो उसको, जो डॉक्यूमेंट है. सो द डॉक्यूमेंट विच आई प्रोवाइडेड यू, उसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का चेक करो, 2 डॉक्यूमेंट है पूरे. बैंक का क्वेश्चन बैंक हमने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के प्रोवाइड किए हैं. क्वेश्चन नंबर बैंक 1, क्वेश्चन बैंक नंबर 2. क्वेश्चन बैंक नंबर 1 इज एंटायरली मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, और उसका रीजन है बिकॉज बीईएल में वहीं से आया था. सो दैट इज व्हाट वी आर टेलिंग यू दैट जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है ना, दैट गिव्स यू एन आइडिया.
अब आगे जो तुम्हारा एग्जाम आने वाला है एचपीसीएल और इसरो, please prepare on the exact line of the previous year paper of ISRO and HPCL. So the paper which BEL will ask you, the paper which HPCL will ask you, जो पेपर आपका इसरो पूछेगा वो entirely different होते हैं. You need to know that. You need to know that आपको अलग करने हैं. Don't you worry छोटू, don't you worry. आप कुछ बड़े काम के लिए बने हैं, आपका अच्छा होगा. अगर नहीं हुआ है तो nothing to worry. बहुत से एग्जाम्स आते हैं, बहुत से एग्जाम्स होते रहते हैं. अब आप मे बी यू आर मेंट फॉर नॉट जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बट छोटू यू आर मेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर. और भी एग्जाम्स है छोटू, आप उन पे फोकस करो. नथिंग टू फील बैड अबाउट. आपकी सिलेक्शन होती है, रिजेक्शन होता है, डोंट यू फील बैड अबाउट इट. इट्स ऑल अबाउट आपके टाइम की बात होती है. आप कैपेबल थे, आई रिमेंबर मेंटरिंग यू, एंड आप कैपेबल हैं इंडिविजुअल. अगर अभी नहीं हुआ है, नथिंग टू वरी. आप पूरे मेहनत से तैयारी करते रहो, पॉजिटिवली आपका कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे हो जाएगा. यस. सो ये सारे क्वेश्चन जैसे आप बोल रहे हैं पर्पस ऑफ एयर वेसल इन रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड ऑल, ये आप क्वेश्चन वहां पे व्हाट्सएप पे भेजते रहो. राजीव सर आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ की फॉर्म में अभी देने वाले हैं. जैसे ये जो पीडीएफ अभी बना है फ्रेंड्स, ऐसे ही पीडीएफ के अंदर हम सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, आज हम आपका बाई 9:30 PM पहला ड्राफ्ट आपको मिल जाएगा, और 9:30 PM इफ नॉट 10 PM हम आपको पूरा एंटायर पेपर ऑफ बेल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पीडीएफ आपके साथ शेयर हो जाएगा. एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट कट ऑफ विल बी सीन. एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, वी आर टेलिंग यू लाइक ये जो आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. इनसे तुम्हें आइडिया लेना चाहिए. यू शुड टेक द आइडिया फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स पेपर. लाइक बेल में 2 क्वेश्चन बैंक मैंने आपके साथ शेयर किया था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, उठा के देख लो, आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन उसी में से मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल वगैरह के आए हैं और क्यों उसमें से आते हैं. अब इसरो का पेपर है या आपका एचपीसीएल का पेपर है, वो फ्रेंड्स अलग होता है. सिलेबस सेम हो सकता है लेकिन क्वेश्चंस अलग होते हैं. जो एचपीसीएल का पेपर बना रहे हैं 2021 से जो पेपर बन रहा है एचपीसीएल का, आप मान के चलो कि पेपर बनाने वाला टीम या ग्रुप वही होगा, तो इवेंचुअली आपका उसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे. एंड सिमिलरली आईएसआरओ का जो पेपर होता है उसमें जैसे क्वेश्चंस आएंगे वो डिफरेंट होंगे. बेल के पेपर में क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट, एचपीसीएल विल बी डिफरेंट, आईएसआरओ विल बी डिफरेंट. You need to prepare very, very meticulously. You need to have the customized or tailor-made preparation for these exams. Yes. Yes. So syllabus PYQ of ISRO. Tomorrow onward, we will start with ISRO. And I tell you friends, tomorrow at 11 AM, 1st June, there is a PPAT for ISRO. अब आप एक काम करना, pre-preparation assessment test, exactly on the lines of ISRO paper, जो 2023 में पेपर हुआ था, उस लाइन के ऊपर कल एक आपका मॉक ऑल इंडिया मॉक होगा, जिसके बाद आपको ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगा. एंड वी विल टेल यू वेयर यू स्टैंड और आपको कितनी और तैयारी करनी है. तो अब आज के इस पूरे एनालिसिस के बाद आप आराम से रिलैक्स करें, और उसके बाद कल आपका 11 o'clock मॉर्निंग में पीपीएटी लगाएंगे आप इसरो का, और उसके बाद आपको आइडिया लगेगा कि वेयर यू स्टैंड. एंड देन यू हैव कपल ऑफ मंथ्स, 4-5 मंथ आपके पास हैं इसरो के लिए. 4-5 months में you can prepare for that. Don't worry छोटू, nothing to worry. Life is like that only. आप चलते रहो, आप जुड़े रहो, and we will surely get very good opportunity. मैंने आपको बताया है कि कोई घबराने वाली बात नहीं होती है. लाइफ में आपको कई बार डिबेकल्स मिलते हैं. यू डिजर्व सम टाइम एंड यू डोंट गेट द थिंग. सो उसमें घबराना नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं करनी है. नहीं हुआ है कोई बात नहीं, दोबारा हो जाएगा. एचपीसीएल में आप जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए ट्राई कर रहे थे, एचपीसीएल आप ग्रेजुएट इंजीनियर हैं, आप तैयारी करो. मे बी यू गेट इनटू एज अ ग्रेजुएट ऑफिसर कैडर में आपका मिल जाएगा. नथिंग टू वरी इन दैट. आप तैयारी करो अच्छे तरीके से. और एज क्राइटेरिया जो है, यस इसरो का 28 ईयर्स है. और फ्रेंड्स अच्छे तरीके से तैयारी करो सो दैट यू डोंट मिस नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग. सो अभी इमीडिएटली व्हाट यू पीपल आर टू डू इज यू आर टू गो थ्रू दिस क्वेश्चंस. ये पहला ड्राफ्ट जो है आपके पेपर का वो निकाला है मेंटर्स ने, और फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द पेपर इज आउट.
और बाई 9:30 PM अभी राजीव सर आपको पूरे का पूरा इसका जो एनालिसिस हुआ है वो पार्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड बाई 9:30 PM आपको पूरे का पूरा पीडीएफ जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो पेपर है उसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा और हम कट ऑफ वगैरह डिसाइड कर लेंगे। सेकंड थिंग आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन फ्रेंड्स, जब तैयारी करो मेक श्योर कि जो आप प्रेपरेशन करते हैं वो उस एग्जाम के अकॉर्डिंगली की जाए, क्योंकि गेट की तैयारी अलग है बिल्कुल, बेल की तैयारी अलग है, इसरो की तैयारी अलग है, एचपीसीएल की तैयारी बिल्कुल अलग है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तैयारी अलग है। तो जितने भी एग्जाम्स आप लगाते हैं आपको उतने एग्जाम्स का उस हिसाब से आपको हर एग्जाम की प्रिपरेशन अलग से करनी है। कट ऑफ हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स, कट ऑफ तब बताएंगे जब आपका सारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस आई एम गोइंग टू शो यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखते जाओ ये क्वेश्चन और प्लीज शेयर ऑल योर क्वेश्चंस, तब आपका पूरा पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगा। ये मॉडरेट डिग्री ऑफ डिफिकल्टी का क्वेश्चन था। आपको यहां पे लगता है कि अगर क्वेश्चन कुछ और होना चाहिए, कहीं और अलग तरीके से होना चाहिए, तो आप वो भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अब अगले 2-3 घंटे हमारा ये पेपर यहाँ पे डिस्कस होता रहेगा बेल का, और इसमें पूरे का पूरा पेपर आपका मैकेनिकल का हम डिस्कस करेंगे। शाफ्ट में प्योर टॉर्शन कब आती है? शाफ्ट में प्योर टॉर्शन किसको बोलते हैं? प्योर टॉर्शन तो आपका इक्वल एंड अपोजिट मूवमेंट। अब इसका मतलब क्या है? इक्वल एंड अपोजिट मूवमेंट का मतलब है, मान लो ये शाफ्ट एक जगह पे रिस्ट्रिक्टेड है, सपोज आपका शाफ्ट एक जगह पे रिस्ट्रिक्टेड है, तो यहां पे अगर आप ऐसी मूवमेंट लगाओगे तो इवेंचुअली रिएक्शन मूवमेंट अपोजिट होगा, इसलिए इक्वल एंड अपोजिट मूवमेंट एक्ट एट बोथ एंड्स। तो तब आपका लगता है बेंडिंग नहीं होना चाहिए, कोई एक्सियल फोर्स कोई बेंडिंग फोर्स नहीं होना चाहिए, शियर स्ट्रेस यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो इसका किस तरीके से आप मोहर सर्कल बनाएंगे? तो अकॉर्डिंगली ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बेसिक क्वेश्चन वहां पे पूछे गए थे। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट आईआईटी खड़गपुर, ऑलरेडी इसका वीडियो बना हुआ है, आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग उसमें जा सकते हैं, आईआईटी खड़गपुर अच्छा ऑप्शन है। जिग्स एंड फिक्सचर का मेन यूज फ्रेंड्स क्या है? ये बड़े आसान से क्वेश्चन थे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेपर था आपका बेल का, वो तो इजी कैटेगरी में था, और ये जो आपका मैकेनिकल का पेपर था फ्रेंड्स, ये आपका मॉडरेट डिग्री ऑफ डिफिकल्टी का पेपर था। तो एज पर मी दिस वाज मॉडरेट डिग्री ऑफ डिफिकल्टी पेपर इन मैकेनिकल, राइट। सो मेन यूज क्या है जिग्स एंड फिक्सचर का? दैट इज एक्यूरेट करना और रिपीटेबल मशीनिंग को करना, राइट। तो ये आपका कॉस्ट रिड्यूस नहीं करता, कूलिंग नहीं करता, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एलिमिनेशन के बेस पे आप एलिमिनेट कर सकते थे। आप देखो ये इंक्रीज नहीं कर सकता, कटिंग स्पीड इंक्रीज नहीं करना है ऑब्वियसली, रिड्यूस कॉस्ट नहीं करना, ये नहीं हो सकता है। तो रिपीटेबल मतलब आपका ऑटो मोड में चलें, मतलब बार बार सेम टाइप की रिपीट प्रोसेस करनी है। तो ये आपका जिग्स एंड फिक्सचर का काम होता है, थोड़े लेवल पे आपका चीजों को ऑटोमेट करना। आयरन कार्बाइड वेयर बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन आर लो मटेरियल को क्या बोलते हैं? तो आफ्टर सेपरेशन ऑफ आयरन कार्बाइड वेयर बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन आर लो मटेरियल कौन सा होता है? तो ये कौन सी कैटेगरी का मटेरियल है? सो आयरन कार्बाइड जो होता है आपका आफ्टर सेपरेशन ऑफ आयरन कार्बाइड, सो मटेरियल किसको बोलते हैं? लो सिलिकॉन प्रिवेंट्स ग्रेविटेशन। सो बेसिकली व्हाइट कास्ट आयरन जो है, ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन ज्यादा होता है, राइट। जो आयरन कार्बाइड बाहर निकल जाता है उसमें से, तो ये आपका व्हाइट कास्ट आयरन बन जाता है, क्योंकि आयरन कार्बाइड अगर है तो कार्बन का कंटेंट ज्यादा है, वो उसको ग्रे बनाता है, राइट। तो ये आयरन कार्बाइड ही आपका सीमेंटाइट कैटेगरी में आपको ज्यादा देता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, आप इनको देख लो, जो आपके ने क्वेश्चन भेजे हैं और जो आंसर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, आप क्वेश्चंस को देखते चले जाओ। ये सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन लेमिनर फ्लो फॉर वेलोसिटी प्रोफाइल प्राइमरीली ड्यू टू विस्कोसिटी एंड डायामीटर। तो आपका आप उस फॉर्मूला में, आपको प्रोफाइल के फॉर्मूला में अभी आपको इक्वेशन दिखाएंगे राजीव सर प्रोफाइल फॉर्मूला में, तो आपको वहां से आइडिया लगेगा। अभी आप बस ये क्वेश्चंस का आंसर्स एक बार वेरीफाई करते जाओ फ्रेंड्स, जो YourPedia आपको दे रहा है, ये आफ्टर डिस्कशन विद द मेंटर्स इसको हम करेक्ट करते जाएंगे। नेक्स्ट इसके जो आपके बनने हैं, इसके नेक्स्ट जो ड्राफ्ट बनना है, तो अभी
आपको जो रफ ड्राफ्ट बना है एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए, रफ ड्राफ्ट, और इसका नेक्स्ट ड्राफ्ट राजीव सर लेके आ रहे हैं, तो आपको इससे और पिक्चर क्लियर होगा। बट हमारी परसेप्शन के हिसाब से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो पेपर आया है आपका वो मॉडरेट डिग्री ऑफ डिफिकल्टी का पेपर है। ओके, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। सो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, इसमें अभी सारी चॉइसेस तो याद नहीं है लोगों को, लेकिन जो जो चॉइसेस थी, तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर बॉइलिंग में होता है फ्लूइड मोशन के साथ। तो जब बॉइलिंग होती है, जब आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा एक्सप्लेनेशन में वेदर इट इज राइट और नॉट। इसरो का 28 एज से हम, इसरो की जो एज है वो पहले 35 साल हुआ करती थी, जिसको 28 किया गया। अब 28 से क्या इसको 32 के लिए हम ट्राई कर सकते हैं? यस, YourPedia इसके लिए ट्राई कर रहा है और हम इसके लिए ट्राई करेंगे। अभी कल से हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। वी वर ऑक्युपाइड विद BEL, वी वर ऑक्युपाइड विद HPCL का जो इंटरव्यू चल रहे हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के, लेकिन कल से हम इसरो के ऊपर फोकस करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो इसरो के ऊपर फोकस करना है YourPedia का, और हम जरूर इस चीज को चाहते हैं कि एज जो है इसरो में वो 28 से अगर 35 नहीं है तो 32 को करवाया जा सके। बिकॉज ऐसे बहुत से मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मास्टर्स कर रखा है, जिन्होंने PhD कर रखा है, जिनको इसरो के लिए जो ट्राई करना चाहते हैं, तो जरूर इसके लिए हम ट्राई करेंगे। सो लेट अस से इसरो में हम एज के लिए भी फाइट करते हैं। ब्रास किस चीज का बना है? तो कॉपर एंड जिंक से मिलके ब्रास बना है। ट्रांसफॉर्मर फिन, ओके, तो ये अपडेट आप एक बार कर दें। ट्रांसफॉर्मर फिन आप एक बार आई थिंक अपडेट कर दें इसको राजीव सर को, तो आपका आंसर ज्यादा अच्छा निकल के आएगा। सो फर्स्ट ड्राफ्ट जो आपके साथ शेयर होगा फ्रेंड्स, उस फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर आप कुछ आंसर चेंज करके वहां बताएं। हाँ, तो आप अपना ऑप्शन वहां बता दें आपके साथ जो पहला ड्राफ्ट शेयर हो रहा है, सो दैट 9:30-10 बजे तक अगर आप कोऑपरेट करेंगे सब लोग, तो 9:30-10 बजे तक आपका पूरा का पूरा जो PDF है वो आपके साथ शेयर हो जाएगा। तो कौन सा जिग यूज किया जाता है? ड्रिलिंग रेडियल होल्स ऑन स्फीयर और सिलेंडर, तो रिंग जिग इसका नाम था। रेडियल होल ऑपरेशन में ग्राउंड ऑब्जेक्ट्स पे रिंग जिग का यूज किया जाता है, तो ये उसका एक आंसर चॉइस दिया गया था। कट ऑफ अभी जल्दी बताएंगे आपको, कट ऑफ एक बार सारा पेपर एनालिसिस हो जाए तो कट ऑफ का एक सटीक नॉलेज आपको देंगे प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन के साथ। तो पहले इसका एनालिसिस कर लें कि पेपर कैसा था फ्रेंड्स, उसके बाद इसका आइडिया लगेगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। सो विल डू दैट। प्रेशर डिफरेंस मैनोमीटर में कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया था, तो ये उसका आंसर था। अभी आप देखते चले जाओ, जहां पे आपको लगता है कि नहीं साहब अलग था। पर्पस हमारा आगे 1-2 घंटे में यही है कि आपको सारे क्वेश्चन जो आपने दिए हैं वो दिखा दिए जाएं, और उसके बाद जो चेंज जहां हमें चेंज करना है उसके अकॉर्डिंगली चेंज करके हम इसको पूरे का पूरा पेपर आपके साथ एक जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वो दे दिया जाए। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो आज पेपर हुआ है फ्रेंड्स, उसका जो PDF है CBT का सॉल्यूशन का PDF, वो शेयर किया जा रहा है आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में। प्लीज चेक दोस PDFs, और उसमें देखो कि कहां पे आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ और चेंजेस लाने की रिक्वायरमेंट है। तो YourPedia हैज ब्रॉट दिस पर्टिकुलर एनालिसिस फॉर यू विद योर हेल्प। यस, सो तेजा, वेरी सून वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस। तो फिजिकल मीनिंग एमिसिविटी का क्या है? तो एमिसिविटी मींस एबिलिटी ऑफ बॉडी टू एमिट थर्मल रेडिएशन कंपेयर टू ब्लैक बॉडी। देखते चले जाओ फ्रेंड्स, क्या आंसर इसके होने चाहिए। अब 100+ है कट ऑफ, या ज्यादा या कम है, ये बहुत जल्दी एनालिसिस का करेंगे, बट सून यू विल गेट सम आइडिया अबाउट दैट। Why is the velocity on surface 0 in flow over a flat plate due to no slip condition? देखते चले जाओ, जहां पे आपको क्वेश्चन में लगता है
Okay, so friends, let me show you this now. VCR, which component is used to increase the temperature? ये मैं आपको अभी तक जितने क्वेश्चंस हैं उनके आंसर जल्दी से दिखा रहा हूं, फिर राजीव सर इसका डिटेल एनालिसिस आपके साथ करने वाले हैं. तो राजीव सर इज गोइंग टू डू द डिटेल एनालिसिस विद यू. आप देखते जाओ फ्रेंड्स. सो आई थिंक सम 70 क्वेश्चन का डिटेल इज देयर विद द मेंटर्स. आप और क्वेश्चन भी भेजते जाओ. 70 क्वेश्चंस आर देयर, द डिटेल ऑफ विच इज देयर. यस, प्रोडक्शन प्लानिंग से क्वेश्चन आने थे बिकॉज वो पिछली बार भी आए थे एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं. क्लिनोमीटर, so why boiler is used in power plants? Just keep checking the questions which are provided to you. Right? ये पहला ड्राफ्ट है क्वेश्चंस का. Now Rajiv sir is going to give you the analysis of this. Yes, boiling is example of convection. ये हमने पहले कर लिया. नुसेल्ट नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन आया था. So अगर आपको आंसर चॉइस थोड़ा सा याद भी है फ्रेंड्स, then you can understand that what will be the answer for that. Absolute humidity in psychometric process का डेफिनेशन आया था. क्या डेफिनेशन था? So आंसर चॉइस इज क्वाइट ऑब्वियस उसमें. आप अपना क्वेश्चंस अगर आपको याद हैं, जितने क्वेश्चन यहाँ पे बताए जाएंगे राजीव सर आपको बताएंगे, बाकी क्वेश्चंस को आप जरूर शेयर करें. Yes, my dear friends, how you all are? Everyone is fine. So I am getting the feedback from the student. That's all the questions, or most of the question has been asked from the YourPedia classroom notes. So really, you are very happy to seeing your performance is excellent is there. And just 1 minute, my dear friends. I am going to take the question there. How many question has been done? Okay, 23 question has been done, right? Fine. So let's start the after discussion after that one. Yeah, proper visible na, my dear friends? Yes sir, I am fine. आप जैसे हैं, dry air होगा. Okay, see what is happening ना, you whatever question you have shared ना, some question is that कि सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन आया है, I haven't get the option. तो ये हमने खुद ही ऑप्शन जनरेट किया है that it could be. इसमें से एक आंसर जो करेक्ट हो सकता है वो ठीक है, रेस्ट 3, क्योंकि अब आपको पता है क्वेश्चन हैज बीन शेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी बेसिस, राइट ना.
So some question might be little bit language problem. Some question I am getting the only question is getting not getting the option, right? That's why few question will get like that, but most of the question sent by the student along with option is also there, so mostly are correct there. Some question may be different here. Okay, so that is the next question, question number 24th, my dear friends. If you think about, so what is the question number 24th? What forms at the eutectoid composition when the austenite is lowered below in the graph? अगर आप क्लास किया होगा अभी 20 जो हमारा मॉड्यूल चला था, ठीक है, उसमें भी हम लोग ये क्वेश्चन करवाए थे माय डियर फ्रेंड्स. दिस इज कॉल्ड परलाइट, सीमेंटाइट, फेराइट एंड बेनाइट. अगर मैं आपसे पूछूं इन दिस क्वेश्चन, कैन यू टेल मी व्हिच वन इज द हार्डेस्ट फेज? देन इट विल बी द सीमेंटाइट. In the question they are going to be asked it when lower the below graph, means if you are going, suppose that was a point and you are going to below, then it is coming what, my dear friends? It is coming what? Perlite. So correct answer will be what? According to given option, the correct answer is what? Perlite. Here we can see at eutectoid point percentage of carbon is 0.8 percent of carbon and temperature is 727 degrees Celsius. So that we can see here. Next, see there. What is the bending moment of a cantilever beam with uniformly distributed load at free end? Right, my dear friends, that is the question. What is the bending moment in the cantilever beam? Suppose that is the cantilever beam, right? And it is the case of UDL, uniformly distributed load, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में सांप वाला लोड भी बोलते हैं. It is something like that, okay? And they are going to be asked what will be the bending moment at the what? Free end. They are going to be asked the bending moment at the free end. So I think that option hasn't been shared by the student. ये option मैंने खुद ही generate किया था, ठीक है? So by that you will get the answer is how much it is coming out to WL square upon 2. It is coming out to be WL square upon 2. ठीक है? At the ये कहाँ पे हो जाएगा my dear friends? You will get at the fixed end here. Simply we can do ना यार. How many total load is there? You can say L length is there and W Newton per meter. That is the W Newton per meter. Total load कितना हो जाएगा बताओ? WL हो जाएगा ना. इस पे total load कितना लगेगा? बोलोगे सर WL लगेगा, है ना? WL लगेगा कहाँ पे? सर L upon 2 distance पे. It will act is how much distance? L upon 2. There W into L is acting and how much distance? L upon 2. So what will be movement about that point? Let's assume that is point A. So that will be WL into L by 2. Then we'll get the WL square bata upon 2. So the answer is coming out to be A according to that option. If option is anything different, then yes, everyone can tell me. अगर कुछ option difference था तो please मुझे बताओ. According to that one, the answer will be that. Okay. Suppose in the question अगर ऐसा है कि free end पे क्या होगा, then it will be the 0. If the question is that what will be at the free end bending moment, then it will be the 0, my dear friends. What is at the fixed end? It will be WL square upon 2. So check the question. If it is going to ask at the free end, it will be 0. If it is going to ask at the fixed end, it will be WL square upon 2. So let's see the question and answer that accordingly. So here we can see that one. Next, my dear friends, what force act on the watt governor? That is the question has been taken from the theory of machine. And if you want to be more precise, from the governor part, watt governor, Hartner governor, that all are. So if you talk about which force act in the watt governor, so there is a centrifugal force is responsible in the case of watt governor. The correct answer will be what, my dear friends? B for Bombay. If you talk about difficulty level, obviously it is a easy question, easy, everyone can answer that one. So works on the centrifugal force principle, right? Speed increases cause balls to move outward and lifting sleeve, है ना? जब ज्यादा move करेगा outward जाएगा और sleeve क्या हो जाएगा? It will going up. So correct answer will be the B for Bombay, centrifugal. Next, welding method in which plate is placed over another and welded. That is a very easy question, huh? This is two plate like that, and after that you are going to be joined. So it is overlap, na yaar. It is going to be overlap to each other. So if that is the case of overlap, simply we can say, so or we can say lap joint. So correct answer is what, my dear friends? A for apple. According to the given condition, the lap joint will be the answer. And everyone, it is a very easy question. We can say दो चीज को लो, overlap करो, then you are going to make a joint. So it will be the what? Lap joint. So correct answer is what? A for apple is the right answer. Lap joint. अगला question आ जाओ. What is the area of parallelogram with base 10 centimeter and height? ये तो यार तुम्हारा मैथ का सिंपल क्वेश्चन था. Base into height, it is coming out to be 50 cm square. Simple question. So B will be the right answer. What is the value of combination 7 C3? ये क्वेश्चन permutation combination, if you have gone through the
permutation and combination, right? Sir ने पढ़ाया होगा आपको permutation and combination. So that question has been taken from that one. 7C3, right? Combination. So it is given by how, my dear friends? It is given by factorial n. If you have remember, it is what? Factorial. NCR is what, my dear friends? NCR is what? Factorial n upon you can say the factorial r, or you can say n minus r factorial. Simple on that concept, will get NCR combination. Factorial n, r factorial, n minus r factorial. By doing that, we will get the answer. Simply, it is coming out to be 35. So yeah, that is the question of the, we can say, the mathematical reasoning part. So it is coming out to be how much? 35 will be the answer. Now, ये क्वेश्चन देखो, दिनेश इज द ब्रदर ऑफ रोहन एंड रोहन इज द सन ऑफ एक्स, हाउ दिनेश रिलेटेड टू एक्स? सो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है. वेल्डिंग में फिलर मेटल मेल्ट बट पेरेंट नॉट मेट ज्वाइन ड्यू टू फ्लक्स अपीयरेंस, ऐसा कुछ था. छोटू बताना एक बार. अभी मैं एक और क्वेश्चन है तुम्हारा वेल्डिंग का, कुछ उन्होंने ब्राजिंग करके कुछ क्वेश्चन भेजा था. लेट मी सी देयर. ब्राजिंग वेल्डिंग में फिलर मेटल मेल्ट बट पेरेंट नॉट मेल्ट ज्वाइन ड्यू टू द फ्लक्स अपीयरेंस, करेक्ट करके भेजना छोटू. क्या है अब ये क्वेश्चन है, ऐसा मैं देख लूंगा. दिनेश इज द ब्रदर ऑफ रोहन एंड रोहन इज द सन ऑफ एक्स, हाउ दिनेश इज रिलेटेड टू एक्स? So it will be what, my dear friends? Simply we can son. By the family tree you can get the answer. Which tense is used in the phrase I shall have read the book by them? तो ये जब सर आएंगे मैम, they will answer that one. No, that is the question of the materials production engineering. ये question production क्या है? What is this? During a drawing of cup, form a metal sheet. You have a metal sheet and you have to draw a cup, right? Which parameter is critical for bending and unbending the sheet? Bending and unbending the sheet. So drawing, you have to be, basically that is the question from the metal forming ना. ये कहां से? हमारा metal forming से है. कब ड्राइंग की बात हो रहा है यहाँ पे, तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा थिकनेस नो ड्रॉ रेडिया. सो बी इज द राइट आंसर. मॉडरेट, सिंपली वी कैन सी देयर. नो, व्हाट इज द वेलोसिटी प्रोफाइल इन लेमिनार फ्लो? लेमिनार फ्लो में वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा होता है? अगर आपको याद होगा तो अगर ये लेमिनार फ्लो है तो वेलोसिटी प्रोफाइल हुआ समथिंग लाइक दैट ना. ऐसे करके कुछ वेलोसिटी प्रोफाइल होता है. मैक्सिमम एट द सेंटर एंड जीरो एट द सरफेस. हियर जीरो होगा. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था मेरे पास, जो ऑप्शन आया था, अकॉर्डिंग टू दैट इट विल बी द पैराबोलिक क्वेश्चन आंसर. इट विल बी वेरी इजी, है ना. अगर ये क्वेश्चन, इफ दैट क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क इन द टर्बुलेंट फ्लो, then it will be the exponential. Turbulent flow में velocity profile we will get the exponential, but in case of laminar flow we will get the parabolic. So correct answer is what, my dear friends? A for apple is the right answer, parabolic. ठीक है. Next question, tolerance. tolerance हम अभी जो क्लास हुआ था इसमें भी parabolic होता है, ड्यू टू ये था क्वेश्चन में, है ना. So what was the question, Nitin? I am getting the question, what is the profile? What is the profile of velocity profile in the laminar flow? If you have best data, please share with me. I will give the answer accordingly. Okay, Nitin and Chotu. Because thin sheet में drawing नहीं करते हैं. Okay, so see the tolerance. Tolerance क्या होता है? Difference between maximum and minimum allowed limit, allowable percentage error, permissible displacement range, accuracy tolerance range. देखो, tolerance is what, my dear friends? That is the difference between the maximum and, just example I want to tell you. Suppose this is the hole, my dear friends. Let's assume you have a hole and hole dimension is let's assume anything 20 plus minus, let's assume 0.1, plus minus 0.1. If you talk about shaft, plus minus 0.1, let's assume. And if you are going to make a shaft, my dear friends, shaft is 20 minus 2 minus 3. ठीक है. So what will be the tolerance there? क्लास में भी हमने डिस्कस किया था. If you have to make a shaft hole, so that is the basic that one is 20. Okay, that one is 20 and tolerance is how much? Plus minus 1. So we can say, sir, it will be like that. Plus minus 1, it will be something like that, plus minus 1. So that is the tolerance zone of what? Hole. Okay, now if you talk about shaft, so shaft is what? 20 minus 3 minus 2. So that is the upper limit and that is the lower limit. That is the lower limit of shaft and that is the upper limit of shaft. Upper limit of shaft. Now, what is the clearance, my dear friends?
क्लियर है? देखो तुम्हारे पास 50 गो शाफ्ट है, 50 गो होल है, यू हैव 50 शाफ्ट 50 होल, द डायमेंशन ऑफ द 50 होल वी कैन से lies between the, you can say how much, 19.9 to 20.1, यहां तक लाई करेगा। 100 का 100 शाफ्ट, 50 का 50 शाफ्ट है दैट डायमेंशन, और जो शाफ्ट है तुम्हारा इसका कितना हो जाएगा, दैट विल बी 19 पॉइंट how much 7 to 19.8, ठीक है। और नाउ आई विल आस्क व्हाट विल बी द क्लियरेंस, कितना, स्पेशली टॉक मैक्सिमम क्लियरेंस कितना होगा। सो वी कैन से इफ आई एम गोइंग टू टेक द difference maximum and minimum allowed limit, that is the maximum hole and that one is the minimum, their difference it could be the a। हालांकि क्लियरेंस की बात करोगे तो ये डिफरेंस होगा बेसिकली, ओके, इट कुड बी इवन द लोअर लिमिट और अपर लिमिट व्हाटएवर, तो डिफरेंस होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नाउ सी दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे इस क्वेश्चन का डाटा, कैन एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट वाज द डाटा ऑफ दैट वन, इफ टू नॉन लीनियर इंटरसेक्टिंग एलिमेंट इन अ ट्रस मीट एन अनलोडेड पॉइंट, देन, ये क्वेश्चन यही था ना, क्वेश्चन यही था ना, विस्कोसिटी एंड डायमीटर होगा आंसर, लेमिनार वेलोसिटी वाला क्वेश्चन था, विस्कोसिटी एंड डायमीटर पे डिपेंड करता है, ओके, हाँ ये प्रोफाइल उस पर डिपेंड करता है, द राइज ऑफ इंडिया, अगर ऐसा था तो आपका आंसर करेक्ट है। Now, if two non-linear and intersecting element, two non-linear or collinear and intersecting element rust meet at unloaded point, देखो यहाँ पे एक ये है और एक ये मान लो ये मिल रहा है, यहाँ पे कोई लोड नहीं है, there is no any load, there is no any load, अगर कोई लोड होता तब दोनों पे आता, अगर कोई लोड नहीं है, because there is no any load, that means there will be zero on that one and that one, both have zero, so correct answer will be both are zero member, that means A is the right answer। हाँ, if there is any load then it could have some value, since no load that means it will have zero answer, so correct answer will be A for effort, both zero member according to that one। Now see my dear friends, that question has been practiced lot of times in the class, Newton per meter square, this is also known as Pascal na, what is the unit of Newton per meter square, you can say pressure unit of pressure is what my dear friends, Pascal, and it is given by Newton upon meter square। now what will be their dimension, तो मैंने आपको बताया था डायमेंशन व्हाट यू कैन कैलकुलेट, न्यूटन इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, वी कैन से सर दिस इज फोर्स अपॉन एरिया, व्हाट इज फोर्स इज सर m into a, area is what, simply we can say sir area is what, meter square, what will be the unit of mass, it will be kg, what will be unit of a, meter per second square, right, into meter square, so what it is coming out to be my dear friends, 1 meter will get cancel out, kg upon meter second square, kg का क्या हो जाएगा, कैपिटल M, ओके, L के पावर -1 T के पावर -2, तो M L के पावर -1 T के पावर -2, M L के पावर -1 T के पावर -2, A is the right answer। So it has been asked dimension and everyone can easily, मैंने क्लास में बताया था, whenever you have to get the dimension, इसको ना SI यूनिट में ब्रेक कर दो, and right, because you know if you have to find the dimension, try to break down all the quantity in the format of MLT, mass, length and time। So Newton था F is given by ma, A is meter square, m is kg, A is meter per second square, we get the answer, okay। now my dear friends, coming to the next point, area of butt joint is given by, है ना, मैं आपको बताया था in case of butt joint, okay, rise of India, see there, so area of butt joint की जब तुम बात करते हो, है ना, butt joint end by end you have to be joined these two material, this one is the one and another one is like that, this is another material and you have to make joint, butt joint, so it is what will be the area of that part of throat, we can simply say it's the thickness of throat into length, what is the thickness of throat into length, by that we will get the area of the butt joint। which theory failure related to the normal stress, अच्छा यही क्वेश्चन था क्या, which theory of failure is related to the normal stress, is that question is right, ठीक है छोटू, you are right, ये सही है, which theory of failure is related to normal stress, क्वेश्चन यही था, normal stress related कौन सा था, so that talks about the maximum principal stress theory, B is the right answer। What is the name of chart used for cause and effect analysis, cause and effect के लिए क्या यूज करते हो, in that is the question of industrial engineering, you are going to use the Pareto chart, for control and cause effect के लिए you are going to use the what,
my dear friends, you are going to use the Pareto chart. Histograms क्यों use करते हो, control chart क्यों use करते हो, क्या मुझे बताओगे? You can comment. Which pattern allow piece separation while removing from the mold? तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लूज पीस पैटर्न. इन द गिवन ऑप्शन इट विल बी व्हाट? लूज पीस पैटर्न. स्टेटमेंट वाज सेम ना? ऐसा ही था ना स्टेटमेंट? इट वाज सेम ना? लूज पीस पैटर्न. Okay, good. Which pattern allow pieces separation while moving from the mold? It will be the loose piece pattern. Now see, in single point cutting tool, clearance angle is provided, my dear friends. In single point cutting tool, why you are going to give the clearance angle? If you have remember, in the classroom you have discussed various times, and lot of times I was to discuss, my dear friends. That was the, and suppose that is your a cutting, that was your tool which is going to be cut there. That is your tool, and that one is a flow of chip. This chip is going to be flow, right, with the velocity vc, and that angle is known as clearance angle. Now my dear friends, that angle is known as phi, or you can say clearance angle. अगर ये angle नहीं होगा तो ये flank है, that is flank, that is what? Flank of the tool will come in the contact with the workpiece, right? ये किसके साथ contact में? workpiece के साथ आएगा. Huge of friction will develop there. To reduce that one, you are going to be give that one. So what answer will be, sir? So reducing friction, right? Strengthen of tool setting, material hardness, no. To give reduce the friction, that angle you are going to give the reduce the friction. अगर ये नहीं दोगे then क्या होगा? ये जो flank है ना tool का, that will come in the contact with the that machine surface, and lot of friction, lot of heat will develop, and that machine surface will be lose their characters. So correct answer will be what? Reducing friction is the right answer. Now come to the next question. Distortion energy theory is also known as. If this question was same was like that, distortion energy theory is also known as. Same question, no, my dear friends. So this is also known as von Mises theory. Distortion energy theory is also known as what? Von Mises theory. Can anybody can tell me for which material this theory is suitable? You know, ductile or brittle you have. So for which material this theory is preferred? Anybody can tell me? So that was easy question, and really yeah, that type of easy question, because उन्होंने बस उसका दूसरा नाम पूछा है. Yes, Teja, fine. Now see, my dear friends, if P equal to 20 kilopascal, okay, I think 20 kilopascal, T equal to 250 Kelvin, P2 equal to 25 kilopascal, T2 is equal to 230 Kelvin, then P and T are, pressure and temperature, that all are always point function. Doesn't matter. That data is just going to make you confused. That data just has been going to make you confused, so that you will get confused. Yeah? Pressure, if you talk about pressure, temperature, right? So what this is? Which type of property? That is a point function itself. Huh? So even I used to say in the class that some data will be irrelevant. That data is given just to make you confused, and you guys have confused. Huh? Yeah, it will be the point function. Good. Next, which of the following jigs is used to drill hole in cylindrical and spherical workpiece? I think sir already have discussed that answer. The answer will be the diameter jig to get the repeatability. Line drawn from point at angle in isometric is how many? Line drawn from a point at angle in isometric is कितना हो जाएगा? 30, 45, 45 and 40. So it will be the how much, my dear friends? 30. Next, drawing D001 means this is called exploded view. That is one is also there. So it is called is what? Exploded view. B is the right answer. That is the question from the design drawing. Next question, which forecasting method used for new product? New product, time series, moving average, qualitative, forecasting exponential. You know, if you talk about moving average, you need past data. You need what? Past data, my dear friends. You need past data. Okay? But the product is new. If the product is new, then how you can find the past data? Yeah? If anything is new, how you can find their past data? Obviously, you don't have. So that can't be used. Huh? Now, if you talk about exponential smoothing, in exponential smoothing, my dear friends, if you have remember, at least one past data is needed. How many? At least one past data is needed. At least one past data is needed.
so that could not be answer. So what will be answer? It will be qualitative forecasting. So हमारे पास जो आंसर हो जाएगा C for Chennai is the right answer. Use for new product, तो याद रखना new product में हम लोग ये यूज करते हैं. Other than that, अगर मैं और पूछूं तो various technique है that you can use also. So according to given option the qualitative forecasting will be there. Okay, that question is repeated. Lap joint, earlier we have seen. Okay, fine. Come to that question. What answer you guys have given that one? Tell me. Which point of material property does a solid change its phase to liquid? Solid phase से liquid में बदल रहा है. So what is called? Melting, critical point, boiling point और sublimation. क्या बोलोगे इसको? Liquid is going to be changed. Solid is going to be changed in the liquid. So simple we can say. What answer you guys are going to be give? Simple ना, melting point ना यार. मेल्ट कर रहे हो ना, तुम्हारे पास आइस है, आइस को मेल्ट करके क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा ना. तो सिंपल क्वेश्चन, इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन. मेल्टिंग. सब्लिमेशन क्या होता? जब सॉलिड से सीधा वेपर बन जाता, लाइक कैंपर, बिस्मथ. इन दैट केस व्हाट सब्लिमेशन? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? लिक्विड टू वेपर, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट. सो सब्लिमेशन, कैंपर विल बी द एग्जांपल. What liquid to gas, we can say the boiling. What is critical point, my dear friends? Critical point is that point na yaar, if you have remembered that data, so that is critical point, right? That is point was critical point you are getting. So correct answer will be A for apple is the right answer. Now see that question. Okay, that question is repeated now. A plate, so it is called is what, my dear friends? Lap joint, as you have seen earlier. So it is coming out to be lap joint. I think some student was asking that question, right? In brazing, what is used to avoid contact between base metal and filler metal? Is what the same question? Batao. Chotu, everyone. Rise of India. Tell me, DV. Is what the same question? Okay. If it was the same question, my dear friends, the brazing, what is avoid contact between the base metal and the filler? Simply we can say, for that you are going to use the what, my dear friends? Flux. Can you tell me, in case of brazing, which type of flux is going to be used? Two type. One is soldering. Another one is what, my dear friends? Brazing. Right. CPM is used to, my dear friends. What is CPM? CPM exists for critical path method. उन्होंने थोड़ा सा मैं बोलूंगा ऑप्शन they have little bit change ना, they have changed the little bit option. Research and development नहीं. For research and development I am going to use the PERT, right? For research and development you are going to use the PERT. For a new product launch that earlier happened, again you have to use the PERT. Okay, so a product development with set of rules and market research. No, CPM is not going to do the market research, my dear friends. It is not going to market research. Market research के लिए I am going to use different method like survey वगैरह. So the correct answer according to the given option, a product development with the set of rules. See, sometimes, my dear friends, I used to say, if you don't know the answer, try to eliminate the option. As you know, research and development cannot be answer, my dear friends. New product launch, if anything is new, for that is the another way of research and development. In the research and development, you are getting the new product. So that is the, you can say, A is repeated indirect way in the option B. So it could not be. Market research, sir. Not CPM part is not used for the market research. So it could be, it could be, sir. It cannot be answer. So what can be answer? C for Chennai will be the answer. So my dear friends, in the exam, जैसे an exam नीति, it should be proper. Eliminate the option if you don't know. तुमको पता है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो यही होगा. So product development with the set of rules. So my dear friends, C for Chennai is the right answer. Now the next question, my dear friends, non-intersecting, non-parallel shaft transfer is done using which kind of gear? That is the again question has been asked from the theory of machine. The topic is gear and gear train. The topic is what? Gear and gear train. मुझे बताओ एस्पर गियर कब यूज होता है जी? शाफ्ट क्या होगा? कोलिनियर होगा, तभी यूज करते हो. बेवल गियर क्या करते हो? रैक एंड पिनियन, समझ देखा होगा रैक एंड पिनियन में भी.
तो हमारे पास नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल है, राइट. फॉर दैट यू आर गोइंग टू यूज द हेरिबोन. ठीक है. हाँ, मैकेनिकल मोड मेड. या आई एम एग्री विथ यू. As I was expecting, not that much amount of difficulty. In which kind of gear axial force is eliminated? Okay. In which kinds of gear axial force is eliminated by putting one more gear with opposite thread? What will be the answer of that one? Hypod. हाँ, अगर hypod Rajput, if in the option hypod was there, then it will be preferred. अगर option में था hypod, then it will be the answer. Fine, good. Which term have avoiding interference in the cutting tools? ये भी क्वेश्चन ऐसा ही आ गया क्या? Interference in the cutting tool. So yeah, same. I think that question has been repeated. Interference, that is your tool, that is your chip which is moving over that one. So that angle, if there is no angle, that clearance angle not will be, then there will be interference between the flank and the machined surface. So we can go with the option is what? Clearance angle. So my dear friends, use of dummy activity in critical path. Why it is going to be used? Dummy activity. So class में usually I used to see dummy activity is what activity? Which neither consume any resources nor any time. दो dummy activity ना तो कोई आपका time लेता है, नहीं कोई resources का consume करता है. It just used to show what, my dear friends? Interdependency. So shows the dependency or interdependency we can say. So A for apple is the right answer. And yes, it was a moderate or you can say easy question it was. Now see my dear friends, in velocity triangle the three sides represent, and that option you have tangential velocity, feed velocity, radial velocity, tangential velocity, feed and vane angle. ठीक है, okay. And if you talk about vane angle, radial velocity, deflection angle, no, deflection angle तो वैसे भी कुछ होता नहीं है, just eliminate the option, वैसे भी ये कुछ नहीं होता है. That question is there, Chotu. I am coming on that question. Relative velocity, absolute velocity, and blade velocity. No, the correct answer is tangential velocity, feed velocity, and radial velocity. And the velocity का दो component. One will be the it is something coming like that, na? That one, na? And after from there you are getting another. So that one like that, na? So you have two component, vertical direction and that one. So correct answer will be A for apple is the right answer. That question has been taken from the machine, fluid machinery or you can say hydraulics. Now see, air vessel in reciprocating pump are used for. Air vehicle को क्यों use करते हो in case of reciprocating pump? Anybody can answer that one? What? Maintaining high pressure for a long pipe to mix water with air to maintain continuous flow rate to reduce the friction loss. Air vessel, that question has been taken from the one topic is there fluid machinery. One topic is there pump. Here I am going to discuss about the air vessel. So air vessel is basically used to maintain the continuous flow rate, na? So C for Chennai is the right answer. Used to maintain the continuous flow rate. So C is the right answer. That question has been done already. Next, Kaplan turbine is effective because Kaplan turbine is effective because why it is effective? Kaplan turbine is why effective? Which type of turbine? Anybody can tell me? It is axial, radial, or tangential? Which type of turbine it is? Axial, radial, or tangential? So no sir, tangential is a Pelton wheel. Radial is what? Francis turbine. And it is what, my dear friends? Axial flow turbine, right? It is what? Axial flow turbine. So the question is that effective because it works under the high head and low flow rate. No, my dear friends, it works in the low head. Kaplan turbine is used for a low head, not for the high head. In case of high head, you are going to use the Kaplan Pelton wheel or Pelton turbine. So sir, A can't be answer, sir. A can't be. Vanes can be adjusted to achieve high efficiency at variable rate. Yes, sir, that is right. In the Kaplan turbine, vanes can be adjusted, right? Vane can be adjusted. So the correct answer is what, my dear friends? That one. B for Bombay is the right answer.
It is used to estimate flow. You can check the correct B or C. What option was there? C, flow is axial. Is that option was there? Anybody? Axial flow के बारे में था क्या? नहीं होगा यार. Otherwise it could be two answer there. No, नहीं होगा यार. ये flow axial भी है. So both could be the answer. So according to the option that a student has provided, I think they have made some mistake. I think option C should not be there. Either option B or option C. Only one will be there. If both are there, both could be the correct. Both could be the correct, right? Because it is axial. And they have advantage that vane can be adjusted. So yes, my dear friends, that was the question. Hopefully you guys have did right. Now that question has been taken from the heat transfer. Potential energy just okay. That is from the theory of machine, not for the emissivity. I was thinking. Okay, next question is from the emissivity. Axis कुछ था. ये radial वगैरह होगा. कनिष्का. It could be कनिष्क. It could be linear. है ना? हाँ, fine. So my dear friends, potential energy is stored. So in which potential? Suppose that is the spring, my dear friends, and that is the, let's assume that one. And now that is their initial length. Okay. Now after applying the force, you are going to increase that one by, let's assume, delta x. So energy stored in the spring is called what? Potential energy. Energy stored in the spring in the form of what, my dear friends? Potential energy. So correct answer will be the spring, not damper, not mass, not pendulum. Okay, pendulum mein you can see here, suppose that is the pendulum. Okay, that is the pendulum, and it is going to be like that. Okay, from there to there, na, from there to there. So if it will reach at the topmost point, they have highest potential energy, but as they will reach there, the potential energy will be zero and kinetic energy will be there. So it is not going to store the energy in the form of potential. Continuously potential and kinetic going to be changed out. So it cannot be answer, my dear. Pendulum can't be. Damper, it is going to absorb the energy. So damper can't be, sir. Mass is nothing. So simply we can do with the elimination option also. Pendulum में ये होता है ना जी, टॉप पे पहुंचेगा highest kinetic potential energy. As you will come down, kinetic energy getting increases. At that point, kinetic energy will be maximum. Now kinetic decreases, potential increases. Right. So correct answer will be what, my dear friends? Spring. Good. Iron carbide diagram, when eutectoid mixture is cooled, it converted into. ये question again, I think that has been repeated. Iron carbide diagram, it will be the perlite. And yes, my dear friends, that is also, अगर मैं पूछूं which is the softest phase कौन सा है? यहाँ पर iron carbide पे बात करोगे, ferrite और perlite. Which one it could be there? That is also going to be asked. Fine. Inertia governor. Okay, name itself indicate inertia governor works on. तो यहाँ पे देखो गवर्नर से 2-3 क्वेश्चन has been asked ना, my dear friends. मास नहीं लगाना था दोस्त. Right. Okay, no issue. Rest all are correct ना. Fine. Inertia governor works on. This works नाम से ये inertia. So centrifugal force, conservation of energy, principle of inertia. Yes, inertia पे work करेगा. So it was easy question. We can do that. For 1D FEM, a rod under uniaxial loading is divided into 3 elements. ये बताओ ये क्वेश्चन सही था यार? Tell me. ये क्वेश्चन में कुछ मुझे लग रहा है. There is some mistake. What do you think? For 1D FEM method, I am coming. See, my dear friends, देखो. What you have to do? I have till now only received the how many questions? Only till now. You know your exam is get covered at 4 p.m. Now we will start live at approximate 6 p.m. and till now at that time I was got only 70 questions, right? Only 70 questions I have got till now. That's why it is not easy to predict what could be the what you can say what cutoff. So unless and until I am not getting all the data, but yeah, it is expected. Question is easy, no doubt. Question pattern is easy. And other than your PDA student, you might have, if you talk, they will used to say कि मैंने industrial छोड़ दिया था. So obviously अभी मेरे पास industrial का question आया ही नहीं है. So you have to be sent them.
ठीक है. So you have to be send all the questions. इसके बाद हम लोग फिर फाइनल कंक्लूजन करेंगे what could be. लेकिन yes you can expect little bit since the question level is easy, so it could be higher, है ना. some student I will find how question is easy sir. अगर तुमने इंडस्ट्रियल अच्छा से नहीं पढ़ा then obviously it will be difficult to you, but mostly question are theoretical, not taking longer time. On that basis I can say, right. See, next, a body side view is rectangle, front view is what my dear friends? Front view is rectangle and top view is circle. बताओ यार, a body side view you are going to see the rectangle side से, front view is again rectangle and top view is circle. Then this type of object will get what? Cone, cube, you know, a square pyramid or cylinder. So it will be the cylinder. Cut करो, cylinder लो, side से देखो, front से देखो, you will find that one. Which used to preheat the compressed air before entering the combustion chamber with the use of hot exhaust gases from the turbine in regenerative cycle. Regenerative cycle में, so that is the question has been taken from the Rankine cycle with reheating, with regeneration. For the regeneration, what you are going to do? You are going to bleed the stream, right? और ये कहाँ पे भेज दो bleeding करने के बाद? Where you are going to send by bleeding that one? बताओ कोई? तो हाँ, regenerator में, right? It is going to be sent in the regenerator. So correct answer will be A for apple. ऐसे यहाँ पे बच्चा थोड़ा दिमाग लगा सकता था कि okay, in the question regeneration is talk and the option regenerator is there. So it was easy question. Anyone can guess, na? Anyone can guess. I don't think the student will find difficulties. Huh? Right. Chalo, fine. Recuperator. Recuperator, this is one type of heat exchanger. Recuperator and regenerator is a type of heat exchanger, my dear friends. Okay, some question I have from the, you know, production, sorry, not production, industrial engineering, plant layout with continuous workflow and the minimum material handling is product, combined, process or fixed. So plant layout, you talk about what, my dear friends, it will be the product, not layout में तुम्हें यही देखना है कि how you have to arrange the product so that it will run in the smoothly. It will run in the what? Smoothly. So it could be the product according to that option. Okay, you know, my dear friends, Brinell hardness test. Why you are going to measure the Brinell hardness? This is going to be measuring the hardness. If you have to check the hardness, so basically two types of hardness is also going to measure, my dear friends, if you have remember. One is for the penetration, against the penetration, another one is for the scratching. So can anybody can tell me Brinell hardness is going to be checked for penetration resistance power or scratching? You can make a comment. Right. So what will be the answer, my dear friends? It will be the here thick indental heavy load. A is the right answer. Brinell hardness number से that question has been taken. But यहाँ पे देखना material क्या था? Which inventory model associated with an annual material consumption? An annual material consumption. ABC. VED means vital essential desirable, right? VED exists for vital essential desirable. Okay. But the question is that which inventory model associated with annual material consumption? There is annual material consumption, right? तो तुमको पता होगा in ABC, what? That is the inventory control system. ABC basically you are going to put that atoms in the category A, which have less in number, but their budget is approximate 80% of that one. Their budget is what? Approximate 80% of the total budget. So A, B क्या होता है? इसका जो quantity होता है, it could be higher than A but lesser than B. और C का जो होता है, its quantity is very very high, but you know their what cost is less. जैसे तुम्हें एक बात बताओ, just understand through an example. You have to be design a car. Then what will be quantity A? Obviously, sir, piston cylinder arrangement. If there is no piston cylinder arrangement, how you can design a car? It is mandatory. And total cost, piston cylinder arrangement will take the mostly amount of the cost. If you talk about B, then it could be clutch brake, it will be the steering, right? That is the B category. If you talk about C, there could be nut and bolt. Lot of nut and bolt is there, but their consumption is very very less. So the correct answer will be what, my dear friends? A for apple is the right answer here. Okay, what?
Okay, fine, good. Come to the next question. Which method deals with the order outlet, production schedule, coordination with the various department? So ये question has been taken from the that we can say aggregate production planning. APP will be the answer, aggregate product planning. So my dear friends, till now I have get only 70 questions. Rest question I am going to share that PDF. If you find any improvement is there in the option, you are welcome to share with our in the Telegram group or in the WhatsApp group. I am going to share that question. The rest question, if you have remember, so don't forget share with you, and I will give the complete PDF for your satisfaction to how much marks you are getting. If you talk about overall paper, so my dear friends, basically two types of students are there. One can think okay it was a moderate, and one can think sir it was a easy, depending upon the things, you know. 70 question till now I have discussed, only 3 or 4 question has been taken from the industrial, but after the 70 question I think most of the question, as I am getting the feedback from the student end, is most of the industrial engineering question as I am getting. You can say me it is right or no, because I was not able in the exam. So if the student who have covered in details industrial engineering, it was covered on the YourPedia earlier. If you go to the YouTube, you will find that one. For that people think is yes sir, this question paper is easy. But for those guys who left at the production, that one industrial engineering and going to sitting exam, they think no sir, question paper is tougher. So now you have to be judged in which category you fall. If you talk about me being a teacher, so I think overall the question paper is moderate, shifted towards the easy. So little bit we can expect. Cast terrain में cast thick indenter low head होगा ना sir. Let me see. So that thing you have to be keep in mind, my dear friends. And one thing, if you are mechanical guys, really one thing is very frequently I used to say, you have lot of opportunity, my dear friends. Different exam. Now ISRO has been notified their notification, and lot of exam is coming to you. If that exam is, hopefully good luck for your result, and I want that you get selected in that exam. But unfortunate, if you are not getting selected, don't be feared. Okay, हार नहीं मानना है. You have to be prepared, because yes, this year lot of vacancies coming for the mechanicals, and the good thing is that they are not taking through the gate. They are going to be conduct their separate exams. So if you have a potential, and whatever mistake you have made, my dear friends, I used to say in the class, गलत करना उतनी गलत बात नहीं है जितना कि उससे सीख नहीं लेना है. Right? If you have made a mistake, learn from that one and try to improve in the next exam. And obviously तुम 4 क्या होगे exam, but you have to be take the learn, you have to take the lesson that what you have made the mistake, that one, why you are not going to be compact that one, and work on that one, try to remove all that, and you will get selected in the next exam. So you have lot of opportunity. Right? Cut off क्या जाएगा Mr. Prastham? Earlier I have told you, because I don't have all the data. Right now only 70 question I have. I am waiting for the next question. ये हमारे पास memory based question था. It could be some answer could be the wrong, some question could be the wrong, because it is a memory based question. So once I get the whole questions, once the question has been given by your IO, then I could be able to most accurate. You could do most accurate of the that cutoff. Otherwise अभी मैं कुछ बोल दूं, that is not good, my dear friends. But as I told you, it could be little bit higher according to all the question that I have gotten, that I have got till now. It could be little bit higher. It could be, but what it could be exactly, once I get the question, then only I can make a comment on that. So no rise of India, it could be, it can't be, right? That much amount can't be. As you are going to be right here, the rise of India, it can't be. Okay, that much amount cutoff can't be go there, it cannot be there. Okay, that PDF you'll get the in the link, description bolte na, in the description of YouTube, we will get the link to join the WhatsApp group or Telegram channel, where I am going to share all that question, and rest question you have to be shared. Right? Anyone have any doubt, my dear friends? So once again I want to tell you, if your preparation is good, आपने एग्जाम बहुत अच्छा दिया है, then wait for the result. If you think no, my exam is not good, so don't हारना नहीं है, don't lose your patience, start your preparation, and whatever mistake you have made there, try to work on that and get the result. Okay.
Okay, my dear friends. So anyone have any doubt further? ग्रुप होगा यार छोटू, ग्रुप होगा यार, ग्रुप होगा, मैं भी बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा. सो देखा ओवरऑल. अच्छा यही बताता हूँ, यू नो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ student will think okay, in the you know in the BEL exam mostly question has been taken from the industrial engineering, mostly question has been taken from the industrial engineering. So they think in all the exams same thing is happening. No, my dear friends, in the, because you know all the exam have different requirement. Yes, it have the same thing, but they have something more priority. Like exam, if you talk about ISRO, ISRO, ISRO and BEL, mostly they are going to focus on the industrial engineering most of the time. So in the ISRO, you will also find mostly question from the industrial production, you know, fuel analysis from that part, because that is a research organization. Okay, so my dear friends, thank you, and yes, good luck, and also good night. Don't be don't be worried, you will get something positive. And चलो जैसा भी एग्जाम था सबके लिए था, अब आप पे डिपेंड करता हाउ मच यू आर गेटिंग. Let's see, once I am getting the whole question, then I will share. Right now I am going to share that one in the group. Okay, चलो बहुत टाइम हो गया आप लोग का भी, आप लोग भी सुबह से आज लगे हुए हो, है ना, ऑब्वियसली सुबह से लगे हो सब कि सर अब करना है आंसर का वेट एग्जाम, फिर आंसर. हाँ, सो आई कैन अंडरस्टैंड, बट थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू पेशेंस. एंड इसी तरह से आपको पेशेंस रखना है और निगेटिव नहीं होना है दोस्त. अगर कुछ अच्छा नहीं भी हुआ है, work on that, improve that one, and ultimately get the selection. Thank you. Good night.